We will continue in a while, just some technical problem. Okay. Screen evada distoy. So, at the end of the year, there is a bank overdraft. So, on credit side, by balance brought down, so साल की शुरुआत में भी बैंक ओवरड्राफ्ट ही था. Medicines, rent, subscriptions to magazines and periodicals, operation theatre, construction expenses. So that is a capital expenditure, take a note of it. Honorarium to doctors, salaries, miscellaneous expenses, medical equipments purchased, again a capital expenditure, charity show expenses, and closing balance of cash. So in the beginning as well as at the end, there is a overdraft to bank, specific mention, and now you can see क्या धमाका होने वाला है. Outstanding subscription at the beginning of the year, at the end of the year. Pre-received subscription at the beginning of the year, at the end of the year. 12% investments, no addition throughout the year. अगर अच्छी आदतें लगानी है परमानेंटली, कारण यही चैप्टर फाउंडेशन में भी है, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 12% से साल भर का ब्याज मिलना चाहिए, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो दिख रहा है, लेकिन 12% से 1,30,000 रुपये साल भर का ब्याज होना चाहिए. 10% से 13,000 और ऊपर 2,600, तो ब्याज होना चाहिए साल भर का इनकम. और ऑलरेडी आपको मिला है कितना? तो इतना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग का टिक मार्क. पहले सब्सक्रिप्शन को 4 टिक मार्क. वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स आई एम कवरिंग अप इन रिवीजन. आज एक कवर करूंगा, कल एक करूंगा. टुमारो वी आर मीटिंग फाइनली फॉर द लास्ट लेक्चर. Plus there will be a paper from 12:30 to 3:30, practice paper number 3. आंसर शीट लेके आपको आना है. 3:30 बजे मैं आंसर पोस्ट करूंगा. चाय पी के 4 बजे हम लेक्चर शुरू करेंगे. सो अलग अलग मार्किंग्स हम देख रहे हैं. मेडिकल इक्विपमेंट. अच्छा, मेडिकल इक्विपमेंट में एक एडिशन है पेमेंट साइड पे 60,000 का. तो मेडिकल इक्विपमेंट को टिक मार्क कीजिए. जरा स्क्रीन पे देखिए. मेडिकल इक्विपमेंट का ये ओपनिंग बैलेंस है. पेमेंट साइड पे एडिशन हुए 60,000. सो टेक्निकली ईयर एंड में मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए कितने के? 1,80,000 के. लेकिन आपके सामने मेडिकल इक्विपमेंट 1,52,000 है. सो देर इज एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ऑफ 22,000 डिप्रिसिएशन. इज दैट राइट? सो मेडिकल इक्विपमेंट को 22,000 का डिप्रिसिएशन है. मेडिकल इक्विपमेंट को, दैट्स राइट. स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 46,500 at the beginning of the year, 43,000 at the end of the year. मेडिसिन्स परचेस कुछ दिए हैं, देखते हैं. हाँ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स है, ठीक है. स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स हम देख रहे हैं. हाँ, यहाँ पे है, एकदम ऊपर है वो. तो जब प्रॉब्लम 2 पेजेस में स्प्लिट होता है
थोड़ा सा गलत सेमी होता है। तो मेडिसिन्स को टिक मार्क करके रखिए। कैसे रिकॉर्ड करना है जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की कीमत कम हो रही है, सो नेचुरली बिल्डिंग पे कितना डिप्रिसिएशन दिख रहा है? 24,000। रेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे रेंट दिया है 76,000, सो रेंट को डबल टिक मार्क। पेमेंट साइड पे रेंट को डबल टिक मार्क। साल के पहले दिन 22,000 रेंट पेएबल है और साल के एंड में 33,000 रेंट पेएबल है, रेंट को डबल टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, साल के पहले दिन 24,000, साल के आखिरी दिन 25,200, सैलरीज को टिक मार्क, डबल टिक मार्क। सैलरीज को डबल टिक मार्क एंड एज एक्सपेक्टेड ओपनिंग कैपिटल फंड इज गिवन टू यू। प्लीज गिव द हेडिंग, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जाना है उतना समय जाने दो। बुक्स ऑफ R.K. वर्मा हॉस्पिटल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक एक फॉर्मेट आप रूल आउट करके आइए, तो कोई सरप्राइज या शॉक तो नहीं है। आई एम वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर्स इन टीचिंग फील्ड, यू मस्ट हैव सीन। मैंने 3-4 फटाफट मैसेजेस दिए थे आपके लिए, ये इंटीमेशंस थे। अनबिलीवेबली गुड प्रॉब्लम, पहली बार ये वर्ड मैंने किसी प्रॉब्लम के बारे में यूज किया है। बुक्स ऑफ R.K. वर्मा हॉस्पिटल, income and expenditure account for the year ended 31st March 2015, balance sheet as at 31st March 2015। हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हो तो एक कॉमन बोर्ड देखा जाता है, और ये बोर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल है। अति घाई संकटाग्नि, कहीं भी आपने जल्दबाजी की कि आपके लग गई, बराबर है। एकदम शांत मन, बस बाकी कुछ करना नहीं है। एंड हियर वी गो, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां की कुछ डिटेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं। पहले कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड 5,08,400, हम साथ साथ चलेंगे, कोई आगे नहीं जाएगा और कोई पीछे भी नहीं रहेगा। इवन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, मैं इतना सिंसियरली ये लेक्चर का प्लान कर चुका हूं, उतने ही सिंसियरली ले रहा हूं, आपका भी सिंसियरिटी एक्सपेक्टेड है। ओपनिंग कैश बैलेंस, फॉरगेट अबाउट इट। गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड by government grant 1,20,000। इस प्रॉब्लम की हाईलाइट, सब्सक्रिप्शंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड by subscriptions, inner column 1,65,000। ये सीए इंटरमीडिएट की लेवल का प्रॉब्लम है, बराबर है। हाँ, तो
एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। काजल काका, अच्छा जरा ध्यान दीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। साल के पहले दिन कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी? बोला पटकन। हाँ, मतलब ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। सिंपल एजम्पशन, लेस फॉर लास्ट ईयर 26,500। इनर कॉलम 1,38,500। इसका डबल इफेक्ट हमें नहीं देना है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा जो हमें नहीं बनाना है। साल के एंड में आउटस्टैंडिंग 38,500 ऐड आउटस्टैंडिंग 38,500। Current year's income must be considered in current year whether received or not. 1,77,000 inner column. Closing balance sheet asset side. Outstanding subscription. Closing balance sheet asset side. Outstanding subscription 38,500। प्लीज शॉर्टकट लिखना अवॉइड कीजिए, साल भर बता रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 14,500। कैसे देखोगे इस फिगर की तरफ? करंट ईयर का इनकम हमें लास्ट ईयर में मिला है, लेकिन वो रिलेटिंग टू करंट ईयर है। एड received in last year, and received in last year 14,500 inner column 1,91,500। इसका डबल इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नहीं, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, हमें नहीं देना है। और साल के एंड में हमें 25,500 सब्सक्रिप्शन मिली है करंट ईयर में, बट इट इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया, इंक्लूड भी किया। लेस प्री रिसीव्ड, लेस प्री रिसीव्ड, this is not income of current year. Amount is 25,500. Finally, subscription which will go in outer column 1,66,000। और इसका डबल इफेक्ट कैपिटल फंड के बाद 5-6 लाइनें छोड़िए। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन पूरा लिखना है, प्री और रिसीव्ड के बीच में डैश। क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 25,500। Any income received in advance is our liability। सबसे चैलेंजिंग आइटम हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, द बेटर थिंग इज दैट वी शुड कैपिटलाइज इट। कैपिटल फंड में ऐड डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, ऐड डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर
सो कैपिटल फंड इनर कॉलम में दिखेगा 6,68,400 इनर कॉलम में। नॉर्मल डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डोनेशन रेवेन्यू रिसीट 1,15,115,000 income of charity show revenue income by income of charity show 1,13,000 interest on investment income and expenditure account credit side by interest on investments inner column 12,500 और साइमल्टेनियसली हम क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पे 12% इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अमाउंट होगी इनर कॉलम में, कारण ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वहां ऐड करना पड़ेगा। करंट ईयर का इनकम आता है 15,600, लेकिन मिला है इतना, तो इतना आउटस्टैंडिंग है 3100। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड आउटस्टैंडिंग 3100, outer column 15,600, closing balance sheet asset side 12% इन्वेस्टमेंट में ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3100, investments will go in outer column 1,33,100। आगे साल के पहले दिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की साल के पहले दिन, सॉरी ये क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, मेरी गलती हुई। क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 41,500। So receipt side we have finished completely। साल के पहले दिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, हमारा कोई संबंध नहीं है। मेडिसिन्स, हाँ चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू मेडिसिन्स कंज्युम्ड काय लिहायचंय ते बघा। ही मेडिसिन्स परचेस्ड आहेत आणि आपल्याला अमाउंट फाइंड आउट करायची आहे टू मेडिसिन्स कंज्युम्ड। लक्ष द्या, इनर कॉलमला 1,27,000 लक्ष पाहिजे। या प्रॉब्लेम मधली दुसरी हायलाइट किती आहे? 500। ओके, नोट्स नाही वापरल्या आणि इथूनच वापरलं की थोडंसं असं होतं। 500 ओके। चला, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स बघा। व्हॉट इज द स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इयर? 46,500। लक्ष पाहिजे, हा वर्षाच्या सुरुवातीचा स्टॉक आहे ना, म्हणजे ही मेडिसिन आपण या करंट इयर मध्ये वापरली आहेत, हो का नाही? ऍड ओपनिंग स्टॉक, ऍड ओपनिंग स्टॉक
हा ओपनिंग स्टॉकचा सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साईडला जाईल. 46,500 तुम्ही ऍड केलेत. सो टोटल मेडिसिन्स तुमच्याकडे झाली 1,74,000. याचा दुसरा इफेक्ट ओपनिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साईड जो आपल्याला बनवायचा नाहीये. आता क्लोजिंग स्टॉक जो आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे? आता हे ओपनिंग स्टॉक ऍड होतो काय, तर लगेच बंडू म्हणेल लेस होतो, पण का होतो? क्लोजिंग स्टॉक कसा आहे, ती मेडिसिन आपण करंट इयर मध्ये वापरली नाही, ती आपण नेक्स्ट इयरला वापरणार, म्हणून ते लेस करायचं. लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक 43,000, and then medicines will go in outer column. Income and expenditure debit side 1,31,000, आणि याचा डबल इफेक्ट क्लोजिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साइड स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 43,000 क्लोजिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साइड. सो अजून एक चॅलेंजिंग आयटम आपण संपवला. लक्ष पाहिजे, रेंट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट इनर कॉलम 76,000. दिस इज रेंट ॲक्च्युअली पेड इन कॅश, आणि आपल्याला कोणती फिगर वर्कआउट करायची आहे? व्हॉट इज करंट इयर्स एक्सपेंडिचर. मग बघूयात ऍडजस्टमेंट. ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर म्हणजे ॲट द एंड ऑफ द लास्ट इयर किती रेंट पेएबल होतं? 22,000. नॅचरली ते आपण दिलेलं आहे. लेस फॉर लास्ट इयर, लेस फॉर लास्ट इयर 22,000. इनर कॉलम 54,000. याचा डबल इफेक्ट ओपनिंग बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला येणार. आउटस्टँडिंग रेंट आपण द्यायचा नाहीये, कारण ओपनिंग बॅलन्स शीट आपल्याला बनवायचा नाहीये. आणि एंड ऑफ द इयर 33,000 ऍड आउटस्टँडिंग 33,000. So rent finally outer column 87,000. आणि ह्या आउटस्टँडिंगचा डबल इफेक्ट क्लोजिंग बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टँडिंग रेंट 33,000. या प्रॉब्लेमची तिसरी हायलाइट आपण संपवली. Subscriptions to magazines and periodicals, income and expenditure account debit side. To subscription to magazines and periodicals 13,000. Next is a capital expenditure. We are creating an asset. Closing balance sheet asset side operation theater. Operation theater closing balance sheet asset side 1,50,000. Honorarium to doctors, income and expenditure account debit side. 2. Revenue expenditure. 2. Honorarium to doctors 1,24,000. Concentrate. Salaries, highlight number 4. Income and expenditure account debit side. To salaries
96,000. This is amount paid in cash, and like rent, we want to know what is current year's expenditure. At the end of the last year, 24,000 were outstanding. Naturally, हमने दिए हैं less for last year. ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है, दिया है करंट ईयर में, इसलिए हम लेस कर रहे हैं. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग 25,200, and now salaries in outer column 97,200. इसका डबल इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 25,200. So second effect complete. Miscellaneous expenses. चलो, income and expenditure account debit side, revenue expenditure, no adjustment. Miscellaneous expenses 2900 outer column. मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेस, बी केयरफुल, हम डिस्कस कर चुके हैं. नंबर 4. चलो, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, मेडिकल इक्विपमेंट इनर कॉलम 1,20,000, इनर कॉलम 1,20,000, एड एडिशन जो पेमेंट साइड पे आपको मिल रही है 60,000. तो अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखो, टोटल लेके 1,80,000. लेकिन एग्जामिनर कह रहा है साल के एंड में मेडिकल इक्विपमेंट 158 के ही है, लेस डिप्रिसिएशन 22,000, less depreciation 22,000. Now medical equipment in outer column 1,58,000. Income and expenditure account debit side, to depreciation dash, कारण 2 डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग पे भी है. मेडिकल इक्विपमेंट इनर कॉलम 22,000, आगे जब बिल्डिंग का आएगा तब देख लेंगे. चैरिटी शो एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, वो डिप्रिसिएशन की लिस्ट में बिल्डिंग ऐसा लिखिए, जब आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. उसके नीचे चैरिटी शो एक्सपेंसेस 2, चैरिटी शो एक्सपेंसेस 39,000, and closing balance of cash, closing balance sheet asset side, cash in hand 40,500. जरा ध्यान दीजिए, एक स्क्रूटिनी करते हैं. सब्सक्रिप्शन सब कुछ हो गया, 12% इन्वेस्टमेंट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, आ गया
बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम 2,44,000, लेकिन एग्जामिनर बता रहा है कि क्लोजिंग वैल्यू 220 होनी चाहिए, लेस डिप्रिसिएशन 24,000, and then building in outer column 2,20,000, और डिप्रिसिएशन में बिल्डिंग ऐड करो मेडिकल इक्विपमेंट के नीचे 24,000, तो दोनों डिप्रिसिएशन की टोटल आउटर कॉलम में जाएगी 46,000। सो मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, बिल्डिंग हो गया, रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, कैपिटल फंड हो गया, सब कुछ हो गया। मैं आपको घड़ी लगा के 7 मिनट दे रहा हूं, बाकी काम आपका। नो पर्सनल क्वेश्चनिंग, आई रिक्वेस्ट यू एज अ फ्रेंड। मैं किसी पे कंट्रोल नहीं करूंगा, प्लेन खुद का काम कीजिए।
Yes, the available time or given time by me is over. How many of you, your balance sheet has tallied? That's good. बैलेंस शीट टैली होना ही था, लेकिन आप कितने क्विक हो टोटलिंग में, इसके लिए मैंने पूछा. बाकी यू आर द बॉस. अवर रिवीजन नोट्स पेज नंबर 6.7, एक प्रॉब्लम डेथ का हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद टी ब्रेक लेंगे. इतना तो आपको हाँ कहना पड़ेगा. द बेस्टेस्ट प्रॉब्लम I have reserved for revision of not for profit. This was the biggest, toughest from all angles and it tallied in first attempt. पहला डेथ का प्रॉब्लम आज के लेक्चर का बहुत ही बढ़िया नाम है, शांति, समाधान और संघर्ष. इसका मैं सीक्वेंस बदलना चाहूंगा. टेस्ट मध्ये झालाय. What about problem number 11? ठीक है. आशीष, सतीश and Manish were partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Capital accounts: Ashish, Satish, Manish. Creditors: reserve fund, plant and machinery, stock, debtors, cash. Manish died on 1st October 2020. तो लास्ट बैलेंस शीट के बाद ये पार्टनर 6 महीने जिंदा था. And the partnership deed provided that the deceased partner, okay, to be given his share of profit up to the date of death on the basis of the profit of the previous year. तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम बेस मानेंगे, नो प्रॉब्लम. His share of goodwill will be calculated on the basis of 2 years purchase, that is 2 times, अगर मराठी अच्छा है दुप्पट, 2 years purchase of average profit of the last 4 years. The net profit for the last 4 years were first year, second year, third year and the fourth year. तो ये लास्ट ईयर का फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, ये हमें मनीष का प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट ना. सो लाइन से इन सीक्वेंस ये साल का प्रॉफिट हमारे लिए बेस होगा. प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 80,000. प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क प्लस 10,000 plus 10,000. RDD of 4,000 to be created. RDD. The drawings of Manish up to the date of death rupees 40,000. ठीक है. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum and interest on drawing is charged at 6% per annum. Prepare profit and loss account, Manish's capital account और दो important working note. Working of Manish's share in profit and goodwill. Give the heading books of the firm. ये प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे और ब्रेक लेंगे. Books of the firm, two accounts and two
or 3 or 4 working notes, पूछे हुए 2 बनाएंगे, बिना पूछे 2 बनाएंगे। Profit and loss adjustment account, just for 7 lines. In the sequence of partners, Mani's name is last, so his profit sharing ratio is 1/5. उसके बाद एक 12-15 लाइनों के लिए मनीज कैपिटल अकाउंट, प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए take care of 3 things: speed, accuracy and presentation. तीनों क्वालिटीज अगर साथ साथ है, by balance brought down, and in a minute I will start with solution. कल लास्ट 1 hour 15 मिनट्स के लिए मनीष सर ज्वाइन होंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक रिविजनरी पार्ट लेने के लिए। आई विल गिव हिम मैसेज और कॉल हिम। सुबह में बात हुई है हमारे दोनों, हम जब मिले थे। एंड हियर वी गो। 452 को मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। रिजर्व फंड 20,000 का 1/5 4,000 बाय रिजर्व फंड अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टेप नंबर 1। अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टेप नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन अकाउंट एप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000। आरडीडी प्रोवाइड करना है 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट 4,000। 6,000 का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट कैरीड टू कैपिटल अकाउंट 6,000। आशीष सतीश मनीष 3H21H21 में 5 पार्ट करोगे, एक पार्ट 1200 आएगा। 3600 1200 1200 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज्ड 10,000 10,000
10,000, 10,000. Money's capital account credit side by profit and loss adjustment account into bracket profit 1200 working note number 1. नोट का टाइटल proportionate share of Manish up to death हमेशा हम पहले बेसिस लिखते हैं. बेसिस इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और वो हमने मार्कआउट किया था इफ आई एम राइट 60,000. So rupees 60,000 multiplied by 1/5 multiplied by half. He was alive for 6 months after last balance sheet. $6,000 journal entry profit and loss suspense account debit to Money's capital account. साल के बीच में ही ये घटना होने के कारण जब P&L अकाउंट बनाया नहीं जाता, ये डमी अकाउंट ओपन होता है और उसका हम उपयोग करते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2. Valuation of goodwill. Valuation of goodwill is equal to 2 multiplied by average profit of the last 4 years. Therefore, average profits is equal to 1,40,000 plus 1,10,000 plus 90,000 plus 60,000 whole divided by 4. Is that total 4 lakh? So average profits मुझे मिल गए 1 lakh. Therefore, goodwill is equal to 2 multiplied by 1 lakh. So goodwill का वैल्यूएशन हो गया ₹2 lakh. ये 2 लाख रुपये
मनीष के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेंगे। Therefore, Mani's share is equal to 2 lakh. It is a firm's goodwill 1/5. So here this note is complete. 40,000. Money's capital account credit side by goodwill account 40,000. Drawings of Manish up to his debt 40,000. To drawings account 40,000. Interest on capital 10% per annum by interest on capital account हमेशा ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेट करना पड़ता है 10% of 50,000 5,000 and last जिसका 5,000 is it right 2,500 अभी स्ट्राइक हुआ वो फ्लो में हो गया 2500 he was alive for 6 months only. 2. Interest on drawings account rate is 6%, 1% 400, 6% 2,400 और ये भी 6 महीने का। अभी क्या कहना है डेट ऑफ ड्राइंग यहां भी नहीं दिए है तो क्या करना है वैसे भी 2,400 का मैं आधा ही ले रहा हूं 6 महीने मिस्टर मनीष जिंदा है तो फिर उसका आधा करना है या नहीं आगे उसका आधा करना नहीं है व्हेन वी मेक एनुअल कैलकुलेशन ये आधा करना है वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी एज डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन वी हैव टेकन एवरेज फिगर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकिन ये एनुअल कैलकुलेशन नहीं है इट इज ओनली फॉर 6 मंथ सो 2,400 ये साल भर का है उसका आधा 1,200 और जितना भी अमाउंट पेएबल है वो मनीष के एग्जीक्यूटर के लोन को ट्रांसफर करना है हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट $1,03,700 Money's capital account debit side to Money's executor's loan account. Same total on debit side. $62,500. So we'll take a 10-minute break and by 5:16, 5:17 we'll meet instruction same for my online friends also. Thank you. And we'll meet after 10 to 12 minutes.
On page number 3.26 of your revision notes, let us proceed further in second half with the problem of not-for-profit. Following is the receipts and payments account of Chamber of Commerce, 𝐂𝐚𝐥𝐥 for the year ending 31st March 2015. So, accounting year under consideration is 14-15. पहले प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. अगर रूल आउट करके तैयार नहीं है, आई विल गिव यू नेसेसरी टाइम, नो इश्यूज. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक, टू सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग 13,500 फॉर लास्ट ईयर. तो सब्सक्रिप्शन को पहला टिक मार्क. टू सेल ऑफ फर्नीचर 42,000 में आपने सेल किया है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 48,000 है. तो जर्नल एंट्री हर बार आपको दिखाता हूं. कैश अकाउंट डेबिट 42,000, ये 42,000 जाते हैं आरएनपी की डेबिट साइड पे. आपके सामने ये इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट हमें नहीं देना है. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इट इज बुक वैल्यू 48 मतलब 6,000. ये जाता है I&E डेबिट साइड को. ये इफेक्ट हमें देना है. टू फर्नीचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये हम फर्नीचर से इसकी बुक वैल्यू लेस करते हैं. लेस क्लोजिंग बैलेंस शीट फर्नीचर. सो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, वहां जो फर्नीचर दिया है 1,32,000, वहां पे टिक मार्क. 132 को. टू डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग फंड को टिक मार्क, कारण ये डोनेशन इसमें ऐड होंगे. एडमिशन फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन पेमेंट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर्स, रेंट, बुक्स. बुक्स इज a capital expenditure. It is an asset because we are dealing with Chamber of Commerce, right? It is an institute of a businessman for that city of 𝐂𝐚𝐥𝐥. So books is their asset, capital expenditure. Traveling expenses, by 15% investment capital expenditure, you are creating an asset. Invested on 110-14 70,000, तो 70,000 का 15% से आपको साल भर का ब्याज होता है 10,500, लेकिन हमें आधे साल का ही हम रिसीव करेंगे, कारण 1 अक्टूबर को किया. 10,500 का आधा 5250. अगर मिला है तो रिसीट साइड पे आना चाहिए. अगर मिला है तो रिसीट साइड पे आना चाहिए. रिसीट साइड पे तो उल्टा पुल्टा ही हो गया है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट और भी कुछ है, और वो कहाँ मिलेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन में. ये देखो, परफेक्ट मैंने कहा था 2,50,000 है, तो जरा ध्यान दीजिए. हैव अ लुक हियर. 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट है. ये तो पहले दिन से है साल के एंड तक, तो इस पर
हमें 15% के दर से रेट से साल भर का कितना ब्याज मिलना चाहिए? 12% ना? ओके, नो प्रॉब्लम। 12% मतलब 30,000, यू आर राइट। और इस पर हमने कैलकुलेट किया था 10,500। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारा इनकम कितना होना चाहिए? 40,500। ओरिजिनल स्टॉक प्लस एडिशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है तो इतना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आउटस्टैंडिंग है। पूरा कैलकुलेशन मैंने दिखाया है और 12% इन्वेस्टमेंट को भी टिक मार्क, कारण ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट में ऐड करके डेबिट इफेक्ट देना है। आगे इंश्योरेंस, फर्नीचर परचेस, फर्नीचर को दूसरा टिक मार्क। और जरा आप ध्यान दोगे, आपके ही लिए लेक्चर ले रहा हूं, वो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओके, नया फर्नीचर कितने का लिया? तो हमारे पास टेंटेटिवली फर्नीचर हो गया 190-260 का। इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट 48,000 का फर्नीचर हमने बेचा है। तो साल के एंड में टेक्निकली इतना फर्नीचर हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वहां पे कुछ अलग ही फिगर दी है, 1,12,600। एग्जामिनर कह रहा है इतना ही ईयर के एंड में है, ठीक है। सो इट इज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। कितना आएगा डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे? सो फर्नीचर को तीसरा टिक मार्क, एक एडिशन के लिए, एक सेल के लिए और एक डिप्रिसिएशन के लिए। दिस इज हाउ वन हैज टू इंटरप्रेट आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम। मैं हमेशा कहता हूं, और एक बार ही हम मिलेंगे कल, इसके बाद मैं आपको आपकी जिंदगी में अकाउंट्स पढ़ाने के लिए कभी मिलूंगा नहीं। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और आप सभी के लिए 10 तारीख को अकाउंट्स का पेपर है। 11 और 12 आई एम गोइंग टू टेक सिमिलर पैटर्न ऑन द शेड्यूल, आपके सभी ग्रुप पे अनाउंस करता हूं। अपॉर्चुनिटी है, जिनको भी आना है आ जाइए। 12:30 से 3:30, 12:30 से 3:30 दोनों दिन पेपर होंगे। ये मैंने आउटसाइड एजेंसी से बना के लिए, मेरे पैसे गए 12-13 हजार, जाने दो। आई डोंट ट्रीट दैट कंप्यूटराइजेशन एक्सपेंसेस एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई ट्रीट इट एज अ कैपिटल। कारण एक बार मैंने वो पेपर बनाए, सिलेबस बदलने तक, कैन आई यूज देम टिल द सिलेबस चेंजेस? सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर फॉर मी। और मैं ये धंधे बहुत करता हूं। पिछले साल की तुलना में अब भाग जाओगे या बेंच के नीचे एक्शन करोगे, सर झूठ बोल रहे। मैंने 11 के लिए 17 अकाउंट्स के नए पेपर बनाए, 17, और ले भी लिए। और इको के टोटल 7 पेपर मैंने नए बनाए। तो हर साल कुछ नया होना चाहिए। जरा आपकी 12 की एग्जाम खत्म होने दो। अभिषेक सर ने लास्ट ईयर लॉ का रिवीजन लिया था, मैंने ना कहा था, कारण यहाँ पे ही ऑलरेडी 11 लेक्चर थे और इसमें डायबिटीज वगैरह निकल आया था। तो मैंने अभिषेक को बताया तुम्हें लेना है तो ले लो। तो अभिषेक ने ये 2 सेट बनाए थे। तो अभिषेक ने मुझे पूछा, एसएम नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन, इस बार का रिवीजन आप लेने वाले हो? मैं 1700 स्टूडेंट का रिवीजन का लेक्चर ले रहा हूं, 700 इन फ्रंट ऑफ मी, 1000 ऑनलाइन। और मैं एकदम इंथ्यूजियाज्म से भरा हुआ आदमी हूं।
आज जो मैंने रील बनाया है इट इज ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन को मैंने डिफाइन किया अंदर की इच्छा। इतने साल काम कर रहा हूं फिर भी बाल गए दांत गए तो वो डिप्रिशिएट हो चुका है, लेकिन मेरा मोटिवेशन अप्रिशिएट हुआ है। ये मैं आपको राइट टाइम पे दूंगा। ये मैंने रिवीजन के लिए हमारे ही नोट्स से समरी नोट्स बनाए हैं और वो भी कलरफुल। विकास और मैं कम से कम 21 दिन बैठे थे, 4-4 घंटे, एंड यू विल बी हैप्पी टू सी। मैं इसी से रिवीजन ले रहा हूं 1700 स्टूडेंट। और अभिषेक सर ने लॉ के लिए ये ऐसा एक क्वेश्चन बैंक बनाया था। अभी वो बनाया था अभिषेक सर ने, यहाँ पे है, 1 मिनट। नहीं, देखने लायक है। कोई अगर आप में से 2% भी लोग इसमें से कुछ सीख गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अभिषेक सर ने क्वेश्चन बैंक बनाया, देखो। इसका भी पीडीएफ मैं आपको दूंगा जब आपका रिवीजन होगा। तो ये तो अभिषेक सर ने क्वेश्चन का सेट बनाया, तो मैं कुछ अलग हूं, तो मैं अभिषेक सर के रेडीमेड आंसर तो लूंगा नहीं। फिर मैं लास्ट मंडे से इसके आंसर्स लिख रहा हूं, केस स्टडीज है ये। सत्ताईस पेजेस के एडिशनल नोट्स है। मैं कभी झूठ बोलता नहीं। मैं 6 पेज पे हूं, तो अभी 80 या 75% मेरा काम बाकी है। हर दिन मैं रात को 1-1.25 घंटे बैठता हूं, उसके बाद ही सोने को जाता हूं। पेज नंबर 12 तक आया हूं। दिस इज द वे आई वर्क इवन समटाइम व्हेन आई थिंक ऑफ पार्ट और कंप्लीट रिटायरमेंट। तो सीखने की प्रोसेस जो होती है इंसान की, कुछ और नया करो, ये कभी भी खत्म होती नहीं। सो जिनको भी बैठना है पेपर के लिए आ सकते हो। इको के आप मेरे पास थे या नहीं, इतना मैं सेल्फिश सोचने वाला इंसान नहीं हूं। 4 बजे शुरू करेंगे 11 तारीख को, 11 और 12 को संडे, फिर भी 4 बजे शुरू करेंगे, 6:15 बजे रुक जाएंगे। दोपहर में पेपर होगा। आई विल अरेंज द स्टाफ। चलो आगे रिवीजन के शीट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक और ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्लीज 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 तुमच्या गप्पा मी ऐकण्याकरता आलेलो नाही, तुम्ही पण आलेलो नाही। आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन at the end of last year, outstanding subscription at the end of the current year. Outstanding subscription, बघा जरा कशी ऑब्झर्वेशन पाहिजे। at the end of the last year किती आउटस्टँडिंग होती? 23,000। आणि इथे जरा बघा, त्या 23,000 मधली तुम्हाला किती मिळाली? 13,500। काय डोक्यात प्रकाश पडला? म्हणजे अजूनही 13-14 ची 9,500 आउटस्टँडिंग आहे। त्यामुळे क्लोजिंग बॅलन्स शीट मध्ये 2 आउटस्टँडिंग येणार आहेत, फॉर करंट इयर ॲज वेल ॲज लास्ट इयर। सबस्क्रिप्शनला अजून एक टिक मार्क करा, करंट इयरच्या आउटस्टँडिंग करता। नोट्स दिल्या होत्या, मी विचारणार नव्हतो, हा पण आमचा प्राणी। कुठे गेल्या नोट्स? तू कशाला आला? मग काय स्क्रीन प्रेझेन्स, कमाल आहे, खरंच कमाल आहे। मी खरं शांत बसणार होतो, पण काय आता माझ्यासारख्या एवढ्या डिसिप्लिन माणसाला तुमच्यासारखे इनडिसिप्लिन बघितले की रेड सिग्नल असताना सुद्धा सायकलवरनं समोर सरळ येतात लोक, हो की नाही? तुझ्या मागे होतो। लय भारी मनुष्य। फक्त तू मला आत्ता इथे चॅलेंज करू शकतो,
की सर तुम्हाला एक माहिती देऊ का, तुम्ही लॉ शिकवता सीएला, पण तुमचं जनरल नॉलेज चांगलं नाही, असं तो म्हणला तर मला गप्प बसावं लागेल. काय हे पेट्रोलच्या व्हेकलला रूल सिग्नल ऍप्लिकेबल आहे, त्याला कोणी पोलीस धरू शकत नाही. तुझ्या माहिती करता सांग, उद्या तो घोड्यावर ना आला तो बिंदास लॉला घोडा लावू शकतो, कारण ते पेट्रोल ड्रिव्हन व्हेकल करता लॉ आहे. पण मी पाहिलं काय, परत जर पेट्रोलच्या व्हेकलवर दिसला की मी आहेच आहे शिव्या द्यायला, तुला भरपूर एनर्जी आहे, मला शिव्या द्यायचं म्हटलं की एकदम माझ्या अंगात असं मोटिवेशन. चला, गिव्ह दी हेडिंग, बुक्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स. रूल आउट नसेल केलं, आय विल गिव्ह यू टाइम. तुला काही घरी जाऊन नोट्स आणायचे आहेत का दोघांना? देतो ना वेळ, मी थांबतो, रात्री 8 पर्यंत या. फक्त कंडिशन, मला रात्री जेवण बाहेर कुठेतरी द्यायचं आणि मग जायचं. नाही तू ही चड्डी काढली तर बघ. बुक्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स उद्याच्याही लेक्चर करता एक रुलिंग आउट करून या. ऑनलाईनचे आमचे मित्र पण लक्षात ठेवा, कारण उद्या लास्ट मीटिंग आहे आपली. जे काय अजून क्वालिटेटिव्ह करायची इच्छा आहे ते करू. उद्याच्या प्लॅन मध्ये एक नॉट फॉर प्रॉफिटचा प्रॉब्लेम, एक ऍडमिशनचा प्रॉब्लेम, एक इश्यू ऑफ शेअर्सचा प्रॉब्लेम, आणि उरलेलं एक 1.25 तास मनीष सर तुमच्याबरोबर असतील. डेबिट क्रेडिट एव्हरीथिंग. चलो, फ्रॉम ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन काही गोष्टी आपण रेकॉर्ड करू. From additional information, let us record capital fund 3,01,960, inner column 301,960. एक 4-5 ओळी सोडून बिल्डिंग फंड इनर कॉलम, कारण त्याच्यात ऍडिशन होतीये 1,45,000 इनर कॉलम. लक्ष द्या, त्याच्यानंतर 12% इन्व्हेस्टमेंट ॲसेट साईडला, पण त्याच्यामध्ये एक ॲडिशन पण आहे आणि एक आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट पण आहे. त्यामुळे त्याला खरं ॲडजस्टमेंटचे 2 टिक मार्क पाहिजेत 12% इन्व्हेस्टमेंट्सला. आणि त्या पद्धतीने लीव 3 लाईन्स आफ्टर 12% इन्व्हेस्टमेंट्स. अँड नाऊ आय विल से, इवन अजून एक आयटम लिहून टाकू, फर्निचर. त्या फर्निचर आयटमला तर धुवा आहे, 3 ॲडजस्टमेंट आहेत. म्हणजे चांगल्या प्रेझेंटेशन करता 5 ओळी सोडाव्या लागतील. इनर कॉलम
1,32,000. And now I will say our pre-preparation is over. पूरा concentration आपका मुझे देखना है. Opening balance of bank, forget it. To subscriptions, income and expenditure account, credit side. By subscriptions, inner column 1,36,500 less for last year, 13,500. So subscriptions in inner column 1,23,000. पण ओव्हर कॉन्फिडन्स ठेवू नका. लास्ट इयरच्या आउटस्टँडिंग 23,000 होते, त्यातले 9,500 अजूनही आउटस्टँडिंग आहेत. क्लोजिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साइड, क्लोजिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साइड. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन डॅश, आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन डॅश. खालच्या ओळीवर फॉर 13-14 इनर कॉलम 9500 आणि सबस्क्रिप्शनची आपली पूर्ण ॲडजस्टमेंट कंप्लीट करून टाकू. ॲड आउटस्टँडिंग, ॲड आउटस्टँडिंग 40,000 and subscriptions finally will go in outer column 1,63,000. Closing balance sheet asset side. Outstanding subscription च्या लिस्ट मध्ये for 1415 inner column 40,000 आणि मग दोन्हीची टोटल आउटर कॉलमला जाईल 49,500. 49,500. So subscription complete. Sale of furniture. So closing balance sheet asset side furniture record केलेलं आहे 1,32,000 less sold, less sold. बुक व्हॅल्यू मायनस करायची 132 minus 48,000. Furniture will remain in inner column 84,000. जो लॉस होतोय आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, जर्नल एंट्री तुमच्या समोर आहे. 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्निचर, to loss on sale of furniture 6,000. Furniture will remain in inner column only. Still 2 more adjustments. Building fund करता donations आहेत. आपण building fund record केलाय 1,45,000. Add donations, add donations 1,27,000. So building fund in outer column 2,72,000. Concentrate. Admission fees, income and expenditure account credit side. By admission fees
by admission fees 85,050. 85,050 interest on investment, income and expenditure account credit side. There is a adjustment tick mark by interest on investments, inner column 25,000, add outstanding 15,500. सगळं कॅल्क्युलेशन केलेलं त्या जर्नल एंट्रीच्या खालती आहे बघा. आउटर कॉलम 40,500 आणि या 15,500 चा डबल इफेक्ट क्लोजिंग बॅलन्स शीट ॲसेट साइड 15% इन्व्हेस्टमेंट मध्ये ऍड outstanding interest, add outstanding interest 15,500. इन्व्हेस्टमेंट आउटर कॉलमला न्यू नका, कारण ॲडिशनल इन्व्हेस्टमेंट पण आपण या वर्षात केले आहेत. बोला. $30,000 12% आहे ना. थांबा जरा. हा म्हणजे तुम्हाला ते 15% आहे ना 1 ऑक्टोबरला. मी डायरेक्ट पूर्ण घेतलेत का? हा, मग त्याची दॅट इज माय मिस्टेक. अगदी वेळेला सांगितलंस तू, चांगली गोष्ट. किती येतं मग ते? 5250. बरोबर आहे. Even online friends, please rectify. This is a correct calculation. 35,250. त्यातले मिळाले 25,000. त्यामुळे आउटस्टँडिंग आहेत इज इट 10,250. बरोबर आहे. सो इन्व्हेस्टमेंट मध्ये ऍड आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट आणि इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट पण बदला. मगाची 15,500 नाही, 10,250 त्याच्यात ऍड करा. म्हणजे इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट आउटर कॉलमला जाईल 35,250. इन्व्हेस्टमेंट इंटरेस्ट ऍड केल्यावर ॲसेट साइडला इनर कॉलम मध्येच ठेवा, कारण ॲडिशनल इन्व्हेस्टमेंट आपण केलेले आहेत. आत्ता इन्व्हेस्टमेंट दिसत आहेत तुमच्या 80,250. इन्व्हेस्टमेंट कंप्लीटच करायचं असेल तर काय तेही रेकॉर्ड करून टाका. या इन्व्हेस्टमेंट 70,000 चे ऍड केलेत. ऍड ॲडिशन इन्व्हेस्टमेंट मध्ये ॲसेट साइडला 70,000. फायनल अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंटची आउटर कॉलमला जाईल 1,50,250. फायनल अमाऊंट 150,250. 150,250. काय 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 2 लाख. हा, त्याच्यात ऍड करायला पाहिजे होते. 2 + 7 म्हणजे काय येते ती अमाऊंट सांग मला. 250. एक मिनिट. 250 + 70 आणि आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट. माझी मिस्टेक आहे. किती आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट? 10,250. बरोबर आहे. 10520 7 5 12 13 3,30,250 इन्व्हेस्टमेंट इन आउटर कॉलम. चलो
याच्याबरोबर रिसीट साइड संपलेली आहे. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, नो adjustment. 16950 outer column, 16950 outer column. Same about repairs and rent. Two repairs, income and expenditure debit outer column 42,100. Rent, income and expenditure account debit side to rent 78,500. Books, capital expenditure, closing balance sheet asset side books, outer column 1,20,000. 1,20,000. Traveling expenses, income and expenditure account debit side to traveling expenses 42,000 outer column. Investments complete. Insurance, income and expenditure account debit side to insurance 4700, 4700. फर्निचर, याचा इफेक्ट द्यायचा आहे का देऊन झालाय? द्यायचा आहे. ऍड, ऍडिशन, ऍड ऍडिशन, $58,260. So furniture will remain in inner column only. There is implied adjustment of depreciation. Add addition आपण करतोय 58,260. फर्निचर इनर कॉलमलाच राहील. 8×4 = 12, 8×5 = 14. पण एक्झामिनर म्हणतोय फर्निचर पाहिजे 1,12,600. त्यामुळे इम्प्लाइड आपल्याला डिप्रिसिएशन मिळतंय 3×9=12. लेस डिप्रिसिएशन फर्निचर 29,660. 29,660 implied depreciation. and मग फर्निचर आउटर कॉलमला जाईल 1,12,600. आणि ह्या डिप्रिसिएशनचा डबल इफेक्ट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 29,660, 29,660. and last closing balance of bank, normal balance, closing balance sheet asset side, cash at bank 25,000. 25,000. Totaling 5 minutes.
So now please open page number 4.8, scheduled lecture up to 6:15. No question of stopping early, otherwise my plan will fail. In first lecture a day back, that is on Monday, the lecture started due to the YouTube issue. On that day, Divyam was not there personally here, so he would have helped us, but it started at 4:30. So वैसे भी कुछ मेरे प्लान का रह गया है. आज के प्लान में एक एडमिशन का क्वेश्चन है एंड इट इज ऑन कैपिटल रीएडजस्टमेंट. Problem number 15 on page number 4.8. 4.8, it is here. Following is the balance sheet of Harsha and Varsha's firm on 31st March 2020. Profit sharing ratio 3:2. Capital accounts Harsha, Varsha. Creditors land and building, furniture, debtors, stock, cash in bank. They decided to admit Asha on 1st April 2020 into partnership on the following terms. Asha should bring 80,000 as her share of goodwill, which is to be retained in the business. So पैसे बिजनेस में ही रखे हैं. गुडविल टाइप नंबर 1, 2 एंट्रीज का खेल होगा. शी शुड ब्रिंग 1 lakh as her capital for 1/4 share in future profits. Land and building to be valued at 2,40,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग में 40,000 का एप्रिसिएशन है. आगे furniture to be reduced by 10%, furniture minus 7600, RDD 5% on debtors, so RDD will be minus 15,000. स्टॉक की कीमत आपको बढ़ानी है बाय 40,000, तो स्टॉक को भी मार्किंग प्लस 40,000. And the purpose for which I selected this problem, the excess of capital of Harsha and Varsha over their due proportion. तो एक वर्किंग नोट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का of sharing profits in the firm is to be transferred to their respective loan accounts. Give the heading books of the firm. By 6:15 or 6:20 we will stop. Profit and loss adjustment account, say for 10 lines. Combined 3 partners capital accounts,
Harsha, Varsha and Asha write down capital balances of old partners by balance brought down 2,80,000, balance sheet of the new firm as on 1/4/2020, 1/4/2020, accounting procedure. Step number 1, accumulated profit or accumulated loss, it is not there in this problem. Appreciation in land and buildings by 40,000, by land and buildings account 40,000, furniture there is depreciation of 7600 to furniture account 7600, RDD प्रोवाइड करना है 5%, that is 15,000, and stock there is a appreciation
of 40,000. So credit side total 80,000 minus debit 22,600. There is a good amount of profit on revaluation. 57,400 3h22। इसके मुझे 5 पार्ट करने हैं। 50,000 के 5 पार्ट करूँ, एक पार्ट 10,000। 7,000 के 5 पार्ट करूँ 1,400। 400 के 5 पार्ट करूँ तो एक पार्ट मेरा आ गया 11,480 multiplied by 3 multiplied by 2। Cross check. That's perfect. 2. Profit carried to capital accounts. Total profit 57,400. Distribution Harsha Varsha 34440 22960 revaluation account closed. Both sides total 80,000. Capital accounts credit side by profit and loss adjustment account into bracket profit. Three four 440 22960. So now the time has come that we should admit new partner. 1 lakh capital she is bringing, bank account debit to Asha's capital account. By bank account, Asha's column 1 lakh for 1/4 share. Her capital is 1 lakh. गुडविल की 2 एंट्रीज होंगी। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 80,000 और दूसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000 टू हर्षा's कैपिटल अकाउंट 48,000 3:2 to Varsha's capital account 32,000 Asha's column dash. So now the time has come for preparing working note. WN1 new profit sharing ratio. There are 2 steps. Step number 1, balance of 1 is equal to 1 minus 1/4, 3/4. Step number 2, new ratio is equal to balance of 1
multiplied by old ratio. So Harsha 3/4 multiplied by 3/5, 9/20. Varsha 3/4 by 2/5, 6/20. एंड नई पार्टनर आशा यहाँ तो रेडीमेड दिया है, इट इज 1/4. डिनोमिनेटर हम चाहते हैं 20, सो मल्टीप्लाइड बाय 5. इन ऑल 9h/6h/5. तो जरा इंडिविजुअल पार्टनर के अनुसार हम कूल स्टाइल में देख लेते हैं. 5 शेयर के लिए आशा ने 1 लाख कैपिटल लाया है, मतलब 1 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल लाया है. पहली पार्टनर हर्षा की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर करना चाहूंगा. हर कैपिटल शुड बी 9 पार्ट के लिए 1,80,000 रिक्वायर्ड, और उसका कैपिटल तो ज्यादा है. देखते हैं, नसीब से डेबिट साइड में कुछ है नहीं तो काम आसान हो जाता है. जितनी क्रेडिट की टोटल है उतना उसका बैलेंस है. सो उसका कैपिटल है 3,62,440. उसका कैपिटल होना चाहिए 1,80,000. तो बाकी का जितना भी ज्यादा कैपिटल है वो हम ट्रांसफर कर देंगे हर्षा के लोन अकाउंट को. जो लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा लॉ की भाषा में, उस पर उसे 6% से ब्याज भी मिलेगा. डेबिट साइड टू आशाज लोन अकाउंट and the concerned amount will be 0,442 1,82,440. आशा आहे, असे नवीन पार्टनरचं नाव आहे. असे सिमिलर नावं आली. हर्षाचं लोन बरोबर आहे. इमिजिएटली हे हर्षाचं लोन हे मी लायबिलिटी साइडला 5 लाईन सोडून रेकॉर्ड करून टाकणार. हर्षाचं लोन अकाउंट, कारण ही बिझनेसची लायबिलिटी आहे. 1,82,440 आउटर कॉलम, 1,82,440 पहिली कॅपिटल रिएडजस्टमेंट झाली. आता वर्षाच्याकडे 6 शेअर्स आहेत, म्हणजे तिचं कॅपिटल पाहिजे 1,20,000. तिचंही कॅपिटल भरपूर जास्त आहे. किती जास्त आहे बघूयात. क्रेडिटची टोटल पहिल्यांदा घ्या. 3,34,960, 3,34,960 आणि तिचा कॅपिटल बॅलन्स आपल्याला पाहिजे 1,20,000 ऑन द बेसिस ऑफ आशाच कॅपिटल. त्यामुळे टू वर्षाज लोन अकाउंट
to Varsha's loan account, बाकीचे कॉलम्स डॅश, ती अमाउंट असणार आहे 214960. 214960. लगेच वर्षाचं लोन हे लायबिलिटी साइडला रेकॉर्ड करून टाकू. $214,960 and Asha was our base for deciding others' capital. So let us close her capital account. Sheer formality closed. And it's a time to prepare balance sheet. Capital accounts. Harsha 1,80,000. Varsha 1,20,000. Asha 1 lakh. 4 lakh capital in outer column. Last item of liability side, creditors. No change, 4 lakh rupees. Now asset side, land and building, 2 lakh inner column, add appreciation 40,000, outer column 2,40,000, furniture, inner column 76,000, less depreciation minus 7600, furniture, outer column 68,400, debtors, inner column 3 lakh, less RDD 15,000, outer column 2,85,000, stock 1,60,000, add appreciation 40,000, outer column 2 lakh. Bank balance is going to increase by 1,80,000. So it should be 4,04,000. 4,04,000. $11,97,400. So tomorrow 12:30 your last paper, 4 o'clock your last lecture. Thank you very much everyone, even online.
कल मिलते हैं लेक्चर के लिए 4 बजे. Online I will post the paper at sharp 12 o'clock.